Hello students, next topic of biofertilizer subject from section 1. I think it is the last topic of section first. Different agriculturally important beneficial microorganisms. So in the first we will discuss about nitrogen fixers, free living nitrogen fixers, symbiotic, especially rhizobial and actinorhizal. Third one, associative and endophytic nitrogen fixers including cyanobacteria. So here we are starting with the types of biofertilizer. First of all, definition: biofertilizers add nutrients through the natural processes of fixing atmospheric nitrogen, solubilizing phosphorus and stimulating plant growth through the synthesis of growth promoting substances. They can be categorized in different ways based on their nature and function. So बायोफर्टिलाइज़र डेफिनेशन क्या बताती है कि ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट को नेचुरल तरीके से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है N2 को अमोनिया या नाइट्राइड नाइट्रेट में चेंज करके उसको अवेलेबल कराते हैं पौधों को। साथ ही साथ ये प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं एंड ऑल्सो सिंथेसाइज growth promoting substances like growth hormones also. On the basis of their nature and function, biofertilizers can be categorized on simple broadly disseminated classification is as follows. First, nitrogen biofertilizers. These fertilizers fixes nitrogen symbiotically. Symbiotic means symbiotic interaction or relation is mutually benefited, that microorganisms taking their food from the plant roots and providing nutrients to the plant. So both are benefited. This type of interaction or relation is called symbiotic, or nitrogen biofertilizers fixes nitrogen symbiotically. Nitrogen biofertilizers help to correct the nitrogen level in the soil. नाइट्रोजन लेवल को करेक्ट करते हैं. नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ because plants need a certain amount of nitrogen in the soil to thrive. So नाइट्रोजन एक हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए. सो जो प्लांट्स होते हैं उनको ये नाइट्रोजन चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए. तो इसी वजह से डिफरेंट बायोफर्टिलाइजर हैव एन ऑप्टिमम इफ़ेक्ट फॉर डिफरेंट सॉइल्स. हर बायोफर्टिलाइज़र का हर सॉइल के लिए अब अलग अलग इफ़ेक्ट है, अलग अलग लेवल है फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने का. सो द चॉइस ऑफ नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइज़र टू बी यूज्ड, आपने कौन सा बायोफर्टिलाइज़र यूज़ करना है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए. सो इट डिपेंड्स ऑन दी कल्टिवेटेड क्रॉप. आपकी क्रॉप कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कौन सा आप बायोफर्टिलाइज़र यूज़ करोगे जो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा. सो राइजोबिया, make underline it when you will make notes. So as per your syllabus rhizobia हम पढ़ेंगे, mention है स्पेशली syllabus में. Rhizobia are used for legume crops, azotobacter or
spirillum for non-legume crops. So keep in mind, it is clear to you that rhizobia is always used for nitrogen fixation in legume crops. Azotobacter and or azospirillum is used for non-legume crops. Acetobacter for sugarcane and blue green algae and azolla for lowland rice paddies. Clear है? Which biofertilizer is used for which type of crop? Rhizobia for legume crops, Azotobacter or Azospirillum for non-legume crops, Acetobacter for sugarcane, and blue-green algae and azolla for lowland rice paddies. Next is type of phosphorus biofertilizers and compost fertilizers. If you want to take a reading of this, you can take. Otherwise, I'll discuss these two types of biofertilizer in next section, because detailed study of these two topics are also in your syllabus. So next is the classification. Here is the table. I recall you again. So on the basis of their nature, either they are symbiotic, non-symbiotic, associative. So the nitrogen fixing biofertilizers, free living nitrogen fixing biofertilizers, that is non-symbiotic, are Azotobacter, Colostrum, Anabina, Nostoc. These four are free living or you can say non-symbiotic. Symbiotic, Rhizobium, Anabina, azolla. Associative symbiotic, Azospirillum. These are the three types of nitrogen fixing biofertilizers. Next is phosphorus solubilizing biofertilizers, and mobilizing phosphorus mobilizing biofertilizers, biofertilize for macronutrients and plant group promoting rhizobacteria. So this is the classification. In the next lecture, I'll tell you, we will discuss about various biofertilizers or nitrogen fixers. Thank you very much.